Hello everyone, welcome to PTE Reading Filling the Blank Real Exam Question Series, PT 79 Plus series, where we discuss highly repetitive and predicted exam questions, real exam questions जो आपको पेपर में आते हैं. This is number 16 in that series. It means that we have already discussed 15 highly repetitive and real exam questions. So let's get started. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. How I could do is using artificial intelligence and the strategies which we teach you at Marvel PTE for speaking, writing, reading and listening. अब students पूछते हैं क्या सर ये possible है कि हम भी ऐसे ही scores ला सकते? The answer is yes. उस answer को देखने से पहले do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a daily basis. And these are the recent success stories. You can see them in the ticker below also. The latest scorecards जिन students ने अपने targets achieve किए हैं, and these are our star students. Gaurav, who has scored overall 90, Harjeet 89 and Ravinder also scored overall 90. So if they can score using our online coaching method, strategies and the software, so आप भी score कर सकते हो. And PT reading is of 32 to 41 minutes and you have to manage your time well, and it is not scored out of 90, it is scored out of 47 and it has 5 question types जिनका order अब fix हो चुका है. And second last one is reading filling the blanks, which comes after reorder paragraphs and before multiple choice single answers. And this is the real scoring. As you can see, जो PT reading का module है, that is of 47 marks only, जिसमें आप multiple choice multiple answers ignore कर सकते हो because those are of 3 marks only, and you can also ignore multiple choice single answers because those are of 1 mark only. And today's topic is of reading filling the blanks, which means they contribute 15 marks to your reading. 5 questions आते हैं तो it will be of 3 marks each. Okay, and the strategy based on big data analysis, artificial intelligence analysis, we could find out that you have to spend on 2 to 2.5 minutes because आपको यहाँ पे खुद time करना होता है manage. So it's very important you do not overshoot this time. अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? नंबर 1, they read all the words, meaning समझने की कोशिश करते हैं, but the answer is no. You have to skim it, and we teach our students how to improve your skimming. And this is the today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds. After 30 seconds, we are going to start with this. Okay, so first thing what we have to do, we have to skim it. Let's do it quickly so that we can understand the theme, we can understand the tone, positive है, negative है या neutral है, and we can understand the tense कि कौन से tenses use हो रहे हैं. People are naturally concerned about polluting something of energy resources such as oil or coal, but are the wind forms the something with their enormous rotating blades? These huge something are becoming more commonplace in certain of the world, yet for some people they are an unwelcome something of the landscape. Okay, so अब आपको एक आइडिया हो गया कि पोल्यूशन से रिगार्डिंग है, विंड मिल्स के बारे में, विंड फार्म्स के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी भी प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब आपने ये चीज़ें देख ली हैं, आपको टोन पता चल गया, स्लाइटली नेगेटिव टोन है. विंड फार्म्स के बारे में भी उनको डिस्कस किया जा रहा है एज द सोल्यूशन टू दिस, बट उसकी भी प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं. एंड टेंस बेसिकली प्रेजेंट टेंस चल रहा है. Now what you have to do in the second step is जितने भी आपके पास ये options हैं parts of speech की knowledge के basis पे you are going to divide it based कि कौन कौन से nouns हैं, कौन से adverbs हैं, कौन से verbs हैं. And always remember you will always get +3 extra options. अगर अब यहाँ पे जैसे blanks हैं, first blank, second blank, third blank, fourth blank, fifth blank, तो you are going to get 8 options. 5 plus 3, 5 will be correct and 3 will be additional. So 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो अब इसमें मशीन्स क्या है, नाउन है और प्लूरल है. प्रोडक्ट क्या है, नाउन है, सिंगुलर है. साइट देखना जिसको हम कहते हैं, राइट, नाउन है, वर्ब नहीं है, राइट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड इट्स सिंगुलर. फीचर भी आपका नाउन है, आंसर भी नाउन है, रीजन भी नाउन है और प्लूरल है, डैमेजेस भी आपके नाउन है. तो इसमें सारे के सारे नाउन्स हैं. लेट मी क्लियर दिस. एंड
Now let's see the first blank. So people are naturally concerned about polluting something of energy sources. मतलब people concerned हैं, pollution कर रहे हैं energy resources such as oil or coal. अब इसमें क्या फिट होगा? People are naturally concerned about polluting machines of energy sources नहीं फिट हो सकता. What we are going to do? We are going to do process of elimination. What is that? That is our best friend forever. उसमें हम क्या करते हैं? Negative answers को eliminate करते हैं. Okay? प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए क्या होगा, पॉल्यूटिंग अफेक्ट समथिंग, ओके आई हैव आंसर्ड इट, बट पॉल्यूटिंग समथिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज का क्या एक ही समथिंग होगा, नहीं, बहुत सारे होंगे, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है। सो प्रोडक्ट एलिमिनेट कर दोगे आप, साइट सिंगुलर है एलिमिनेट कर दोगे, फीचर एलिमिनेट कर दोगे, आंसर एलिमिनेट कर दोगे। अब आपके पास तीन चीजें बची हैं, रीजन्स, डैमेजेस एंड इफेक्ट। पॉल्यूटिंग रीजन्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कंटेक्स्ट बेस्ड आंसर नहीं बनता। पॉल्यूटिंग डैमेजेस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज भी कोई कंटेक्स्ट बेस्ड आंसर नहीं बनता, बट एक ही ऑप्शन बचा है विच इज पॉल्यूटिंग इफेक्ट्स, क्योंकि इफेक्ट्स हैं, पोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं, एयर पोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं। दिस इज हाउ वी से दैट। So what we are going to do is we are going to drag this and we are going to drop this over here. Now coming to the second one, but are win forms the something. Ab context based or forward or backward reading, right? These are the strategies which we teach to our students. अब backward reading के basis पे आपने ये find out कर सकते हो कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, problem की बात हो रही है। This is problem. तो एक प्रॉब्लम का क्या होता है, सोल्यूशन फाइंड आउट होता है, राइट। तो विन फार्म्स एज अ सोल्यूशन है, तो अब इससे सोल्यूशन का सिनोनिम क्या है, सोल्यूशन का सिनोनिम है आंसर। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट एंड वी आर गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, राइट। सो बट आर विन फार्म्स द आंसर with their enormous rotating blades, these huge something are becoming more commonplace. अब यहाँ पे क्या फिट होगा, बट उससे पहले थोड़ी सी बेसिक ग्रामर नॉलेज। दीज है तो क्या होगा, प्लूरल है, आर है तो क्या है, प्लूरल है, तो इसमें से आप सिंगुलर पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास ऑप्शंस बची हैं, दीज ह्यूज रीजन्स आर बिकमिंग, कोई रीजन की बात है, विंड फॉर्म रीजन है। दीज क्या है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, विंड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। सो क्या वो रीजन्स हैं, आंसर नहीं। डैमेजेस हैं, नो, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास विच इज मशीन्स। सो यू आर गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, बिकॉज हम ऑलरेडी जो प्लूरल है प्रोडक्ट हो सकता था, बट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हम एलिमिनेट कर चुके हैं क्योंकि वो सिंगुलर था। So that's why all the strategies which we teach are very important. We teach you on the context, lexical resource, grammar, right? Content में we tell you skimming, forward reading, backward reading. आपने देखा कैसे हमने backward reading से एक अभी आंसर सॉल्व किया. Then tone is also important. Then lexical resource में collocations, phrasal verbs, vocab is important. Grammar में tenses, parts of speech, because सबसे पहला स्टेप ही हमारा parts of speech का होता है. Parallelism, active passive prepositions and subject verb agreement are important. And now let's move back to the answer again. So अब यहाँ पे are becoming more commonplace in certain something of the world. अब आपके पास ऑप्शन ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे अगर आप देखिए बहुत सारी जगहों पे कॉमन प्लेस वर्ल्ड में क्या होगा, प्लूरल यूज होगा, ओके। सो अगेन वी आर गोइंग टू एलिमिनेट सिंगुलर वंस, और आपके पास दो बचे हैं, रीजन्स या डैमेजेस। और एक नॉर्मल सी बात है, डैमेजेस ऑफ द वर्ल्ड तो हो नहीं सकता, वर्ल्ड के हम रीजन्स की बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्लेस रीजन्स ओवर हियर। Yet for some people they are an unwelcome of the landscape. अब आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, अनवेलकम प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो, फिट हो सकता है, साइट भी फिट हो सकती है, साइट इन द लैंडस्केप हो सकता था, साइट ऑफ द लैंडस्केप नहीं होता, फ्रेजल वर्ब करेक्ट नहीं है, अगर इन होता तो आप फिट करते, तो साइट नहीं फिट कर सकते। अब फीचर यस फिट हो सकता है, अनवेलकम फीचर ऑफ द लैंडस्केप, डैमेजेस भी नहीं फिट होगा, अनवेलकम डैमेजेस टू द लैंडस्केप होता तो फिट होता, बट यहाँ पे ऑफ है तो इसीलिए आपका डैमेजेस नहीं फिट होगा। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज यूज होगी कॉलोकेशंस की, राइट, बिकॉज हमेशा हम कहते हैं लैंडस्केप फीचर्स, दिस इज व्हाट वी से, राइट। अब फीचर्स क्या होते हैं, जैसे अब आप एक गार्डन में जाते हो तो गार्डन के फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हम वहां पे फाउंटेन्स लगा देते हैं, कोई डेकोरेशन के लिए स्टैचू लगा देते हैं। So all those things are known as the landscape features of the garden. So that's why it's very important that you should have knowledge of collocations.
So we have fit feature over here, and let's see if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. And along with that, text based आंसर्स भी दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, अफेक्ट्स क्यों आएगा, आंसर क्यों आएगा, मशीन्स क्यों आएगा, रीजन्स क्यों आएगा और फीचर क्यों आएगा. And you saw how important grammar is. इसीलिए we offer complete grammar course to our students, which is free of cost for elite members and those who take coaching from us in institute. So we tell them parts of speech, subject verb agreement, prepositions, models, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules, sentences. So all these are important. These are 25 to 30 lectures which we teach them to our students. And along with that, we have our reading strategies are one of the fast method कि आप अपना target score achieve कर पाए, चाहे 79 है, 65 है या 58 plus है. And what is that fast method? Using a system that identifies your mistakes. Our system is powered by artificial intelligence, so it's going to identify your mistakes. You are going to learn from a specially designed course. As I said, our course varies for 79 plus, 65 plus and 58 plus, and have your progress checked. Through our software, you can check your progress, and whatever strategies we teach, you can do practice on our software only. So that's why it's important कि जो आप सीख रहे हो वो साथ के साथ implement भी कर पाओ. And remember, you have 2 to 2.5 minutes to attempt your reading filling the blank. In first 30 to 60 seconds, you have to skim the content. In next 90 to 120 seconds, you have to look for clues, you have to find pointers and use process of elimination. All the strategies which we teach are validated and proven ones. What is the proof? You can see the scores in the ticker below as well as these recent success stories. And practice is the key. जितनी practice करोगे उतनी ज़्यादा improvement होगी. Along with practice, evaluation and monitoring are important. And that's why we have daily evaluation surveys which is free of cost for our online members. And we provide complete speaking evaluation, complete writing evaluation and complete listening evaluation. And this is our WhatsApp number 8699121121. And do not forget to subscribe to our channel because we post our informative videos on a daily basis. We give wings to your dreams.